मैं सोच रहा था मैं अपने गले को रेस्ट दे दूंगा, मैंने इतनी देर लगा के टेस्ट बनाया तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं। टेस्ट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक्स कवर्ड बिफोर दिस। ठीक है ना, तो वो कर लेंगे भाभी। क्या क्या कर लिया हमने? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड एंड डेमोग्राफिक कंडीशन। नेक्स्ट सेगमेंट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जब भी आएगा, आगे बहुत बार आएगा पूरी इंडियन इकोनॉमिक्स में, बहुत बार आएगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का कॉम्पोजिशन क्या था। तो आंख बंद करके तीन सेक्टर्स आ जाने चाहिए सामने: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो इसे रिलेट करना कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब लोग कहाँ, किस टाइप के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। अभी बात हो रही है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। Occupational structure refers to the distribution of working persons across primary, secondary, and tertiary sectors. Tertiary is the service sector. Primary sector, it includes production units exploiting natural resources like land, water, subsoil assets, for example, farming, fishing, mining, animal husbandry, forestry, etc. Related to exploitation. Exploitation would not be the correct word. Using of natural resources. We ended up exploiting them. That is true, but still, something related to usage of natural resources. Secondary sector, it includes production units which are engaged in transformation process, transforming one good into another. These units convert raw materials into finished goods. For example, firms engaged in converting sugar cane into sugar, construction companies, power generation, etc. It is called the secondary sector because it depends on primary sector for raw materials. Secondary sector is also known as the manufacturing sector, producing sector. Manufacturing. Tertiary, it includes production units engaged in producing services, for example, transport, education, finance, government administration, etc. This sector finds third place because its growth is primarily dependent on primary and secondary sectors. During the colonial period, during the British rule, the occupational structure of India showed little sign of change. So, little sign of change मतलब prior to British rule भी occupational structure काफी similar था. The state of occupational structure during the British rule can be summarized as under predominance of primary occupation. ये हमने before the British rule भी देखा था कि predominance of agriculture. India was an agrarian economy. The agricultural sector accounted for the largest share of workforce. आगे ना 70 to 75%, आपने कहा था 72% दे रखा है, तो मैं बता रहा हूँ ना कि वो पूरा एरा है. अब 80 to 85% एट द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल, फिर धीरे 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 ग्रोथ होती है, इंडस्ट्री सेटअप होनी शुरू हो जाती है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. और एट द लेटेस्ट स्टेज ऑफ ब्रिटिश रूल, एग्रीकल्चर सेक्टर का नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर सेक्टर 85% से गिरते गिरते 70 to 75% आ गया. The manufacturing and service sector accounted for 10% and 15 to 20% respectively. Okay, मतलब 10, अगर वो 10 तो 15 20 जो भी है. एट द एंड लेटर ऑफ जब 85% है तो वो 15 है, जब ये 70 to 75 है तो ये 25 to 30 है. तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अराउंड 10%, सर्विसेज 15 to 20. उससे पहले लो था क्योंकि वो 85 है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का टोटल लो ही होगा. रीजनल वेरिएशन, another striking aspect was the growing regional variation. The states, कुछ regions तो prosper कर रहे थे, कुछ बहुत ज्यादा backward थे. The states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Maharashtra, West Bengal witnessed a decline in the dependence of workforce on agricultural sector with a commensurate increase in the manufacturing and service sector due to setting up of industries and improvement in the literacy rate. Improvement in the literacy rate. तो कुछ सेक्टर्स में ज्यादा ग्रो कर रहा था क्योंकि इंडस्ट्रियल बेस सेटअप हुई थी.
उस एरिया में, तो वहां पे इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, और ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी रेट वहां पे सर्विस सेक्टर भी, टर्शरी सेक्टर भी ग्रो करा। एग्जाम्पल याद होने चाहिए। However, during the same time, there had been an increase in the share of workforce in the agricultural sector as well. कुछ जगह पे एग्रीकल्चरल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन और बढ़ गई, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, इन सब में फार्मिंग के लिए लैंड सूटेबल है, लिटरेसी रेट लो है, तो उस वजह से यहाँ पे वो ज्यादा बढ़ गया, कंट्रीब्यूशन टू द प्राइमरी सेक्टर। और जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हुई, जहाँ लिटरेसी रेट इंप्रूव हुआ, तो ये है रीजनल वेरिएशन एक्सपीरियंस करें। तो व्हाट वाज द स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, आपको ये याद होना, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एक ही बात है। तो जो इससे पहले डेटा आया था, दैट वाज बिफोर द ब्रिटिश रूल, दैट वाज बिफोर द ब्रिटिश रूल की जो अराउंड 85%। दिस इज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये स्टेट था। ओके, तो इसमें रीजनल वेरिएशन के बारे में पता होना चाहिए और सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन के बारे में भी पता होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर